Hello, it's me Shifa and welcome to my channel. Today in this video I'm going to share with you about the right way of starting your preparation for any competitive exam. This video is going to be extremely useful for those who just not only target for one single exam but want to give or want to try to give other exams too. Let's take the example. If you are someone who wants to study, MBA, and you are not only targeting CAT exam but also the other exam like XAT, CMAT, SNAP, NMAT or other MBA entrance exam. Or if you're someone like who is targeting to give any government exam for securing a job in a government sector. It can be like SSC, banking or any other government job that has the kind of similar syllabus, or someone who's appearing for any kind of aptitude exam in general. This video is going to be useful for all of you. So stick till the end to know how you can make a strategy, and that one single strategy will be useful for multiple other exams at the same time. Alright, so let's get started. Before beginning, I want to tell you that here I'm not going to give you any kind of resources where you can learn all those subjects from, but just I'm going to make sure that what are the things that you need to read on a regular basis from starting from Monday to Saturday, and one Sunday we are going to treat it as a special day and we are going to do something special on Sunday. But from Monday to Saturday you need to follow this structure, and for Sunday we are going to delve into another structure, right? Now also another thing, the amount of time that you want to dedicate for one subject totally depends on you, your weakness, or the syllabus or the kind of exam that you are going to appear for. But most probably the structure is going to be same. The subjects that you have to read is a must. The amount of hour that you are going to give on a particular subject depends on you, and about the resources on where you can study those subjects, that is something that I will cover in another video. Okay, so the first thing that you are going to do from Monday to Saturday each day. Okay, so take a pen and a copy so that you can just write it as a kind of note that what you are going to do on a daily basis from Monday to Saturday. Okay, so here on a daily basis from Monday to Saturday you are going to study 6 subjects. The first subject here is English, or what you can say as verbal ability, reading comprehension. So everything related to English is the first subject that we are going to discuss. So what to do in English basically, I have divided English into 4 categories, and I have seen that in most of the exam these 4 categories are the category that you can break the English subject into. Okay, so now the 4 categories that I want to talk about is vocab, reading comprehension, verbal ability, and reading of a topic. These are the 4 things that you need to do under the English category. Okay, now vocab. Knowing vocab is so important, be it any exam like SSC MTS, which held for class 10 pass out people, okay, or be it the CAT, which is known as the one of the highest or toughest exam. Okay, be it anywhere, knowing vocabulary is going to solve so many problems of yours. So if you are someone who is an avid reader or knows a lot of English, vocabulary comes to you easily, then also I would like to suggest you can give at least 15 minutes of time daily so that you can at least know some better words, or at least practice those words that you already know. Alright, or if you are someone who is at the extreme poor level of knowing vocabulary, then you can start knowing vocabulary. Vocabulary is nothing tough to understand or tough to remember. You should just need to give it in a consistent way. You need to learn few words, maybe 15 to 20 words if you don't know anything, if you are extremely poor. And if you are in the medium, if you are in the neutral way, like you don't know heavy words but you are accustomed in knowing a little bit, then you can at least give it a time like half an hour and learn 10 to 15 words daily. Knowing vocabulary is ultimate important, and it is going to be helpful for any kind of exam. Done. Now under the English subject only, the second category that comes is reading comprehension. So those who are appearing for CAT exam or XAT exam, reading comprehension will be like top notch. बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको.
उस जगह पे पहुंचने के लिए. And if you are someone who is giving, SSC paper, SSC government job की जो paper होती है वो दे रहे हो, तो then you just need to just be a little bit aware of like how the sentences look like and how reading or comprehension feel like. तो ये दो extreme चीज़ें हैं. I will suggest you that again divide yourself, that if you are extremely poor, you need to start from the very basic and start reading novels kind of thing, so that you will get accustomed to like how the reading, how English reading feels like. Okay, if you are on a highest zone that you are a kind of avid reader, you know a lot, then focus on reading Aeon essays or more business related essay, or editorials, newspaper editorials, because that would actually not only improve your reading skill, but also you are going to learn a lot about the topics that are going on in general. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना आपका जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर निर्भर करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. द अमाउंट ऑफ टफनेस your exam will ask, prepare for those kind of RC, and also solve the questions, the multiple choice questions are there, solve them daily, 2 to 3. Look for the previous year questions and have a understand that how the paper looks like, how difficult it is going to be asked, and prepare for that, but at least 2 to 3 give it a try for daily. And इसी के चलते जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है रीडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉपिक. दिस कैन ऑल्सो बी मर्ज्ड इनटू अ रीडिंग comprehension way. As I told you also, like if you are extremely poor, start reading novel. If you are in the highest zone, then read more business related or editorial, because you are going to get knowledge. The reading daily for 30 to 40 minutes, 30 to 40 minutes is extremely important if you are going to appear for any aptitude exam. So read करो आप, जो भी स्टेज पे आप हो उस तरह का पेपर सब करो. Start reading from the very basic general books that are out there, so that you get accustomed to, and then later on shift to the higher options that are available. Right? Now the fourth one that you need to focus on this English subject is verbal ability. Different types of exam have different verbal ability questions. Some ask direct question, like what is a grammatical error here? Like change this into the active to passive voice. What is going to be in the filling the blanks? Choose any preposition among there. So this kind of question is basically asked in SSC exam, in kind of SNAP exam. SNAP exam a little bit of they also include other things like idioms and phrases. They also ask questions on that. But on CAT they will ask you parasymbols, paragraph summary. So based on what exam you are going to give, what exam is going to come nearby, prepare for that exam, focusing on that, and complete one by one, so that you can just get accustomed to every topics that will come under the verbal ability, right? And you can give like 30 minutes for this verbal ability daily. It would be all right. So this is how the English subject comes to an end, where you get 4 things. Number 1 is vocab, knowing vocabulary. Number 2, reading. Once again, reading different topics, getting aware of different topics, reading books or novels or newspapers is ultimately a necessary thing for you. Number 3 is reading comprehension. The type of reading comprehension that your exam is going to ask, prepare for that, solve those questions. And number 4 is knowing the verbal ability. Complete each type of verbal ability questions out there. Take one topic, give it for 2 to 3 days. Take another topic, give it to 2 to 3 days, and complete each topic, so that any kind of exam that you're going to give, you at least know that where it comes from. Right? So we complete here the English subject that you need to prepare for giving any kind of competitive exam. Now, secondly, we come to the mathematics section, which is also known as the quantitative aptitude section. And this is, one of these such section which the basic thing that you need to know is kind of same for all exam. We can categorize quantitative aptitude into 3 difficulty level. The level of difficulty 1, the LOD 2, the LOD 3. In SSC kind of exam, most probably LOD 1 or LOD 2 type of question come. In MBA entrance exam, especially CAT, they will ask mostly from LOD 2 to LOD 3 kind of questions. So whatever exam you are going to give, the LOD 1 is something that you need to cover up. And then based on your exam, you can, if you are giving SSC, then you can only prepare for those LOD 2. If you are giving MBA, then you can also prepare for the LOD 3. So something like that, a mixture of this happens. So whatever it is, LOD 1, the level of difficulty 1 is something that you need to know, whatever aptitude exam you are going to give. All right. So in mathematics,
I would like to actually categorize into two sections. The one section, the first section of this quantitative aptitude is calculation or speed maths, that what I call it. Basically, I used to give it 15 minutes to 30 minutes daily, and what I used to do it here is, knowing the tables up to 30, cubes up to 30, squares up to 50, and so on. These are the basic thing. If you are getting aware of these, then the calculation that you are going to do on the ultimate day is going to take less time. If you are aware of like what's the square of 49, what's the cube of 22, so if you are aware of all this thing, आपका जो कैलकुलेशन का टाइम होता है वो कम होते रहेगा, एंड विच इज़ अल्टीमेटली गिविंग यू अ बेटर एज देन रेस्ट ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट्स. तो इसको 15 से 30 मिनट हर दिन दो. देयर यू आर गोइंग टू रिवाइज द टेबल्स डेली, you are going to revise the squares, the Pythagoras triplets, prime numbers, and how to calculate in a short way, and all those things that actually will help you to improve your calculation and to increase your speed. Alright, so this was the first section under mathematics subject. The second section is knowing each of the topic. Mostly जो quantitative aptitude में देखा जाता है वो होता है number system, algebra, geometry, arithmetic, देन सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और कम्बिनेशन ऑफ दिस, राइट. तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3 एलओडी होती है, तो हर एक टॉपिक को उठाओ, उसके बारे में पूरा बेसिक जानो, उसके एलओडी 1 सॉल्व करो, एलओडी 2 सॉल्व करो, एंड अगर आप ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे एलओडी 3 भी आती है तो एलओडी 3 भी सॉल्व करो. ठीक है, 1 by 1 वी आर गोइंग टू टेक इट 1 by 1. बहुत डिफिकल्टी नहीं है. एक टॉपिक को उठाएंगे, उसके बारे में पूरा बेसिक जानेंगे, एक कंप्लीट करेंगे, 2 वाला भी कंप्लीट करेंगे, 3 अगर वैसा एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी कंप्लीट करेंगे. बस करते रहो. एंड डेली प्रैक्टिस, डूइंग डेली प्रैक्टिस, एक्चुअली यू आर पुटिंग द इफोर्ट टू स्पेंड 15 to 30 minutes in revising the calculation. You are giving 2 to 3 hours in knowing any kind of टॉपिक. यू आर गिविंग 1 hour टू एक्चुअली सॉल्व दोज क्वेश्चंस. अगर आप डेली कर रहे हो कंसिस्टेंटली, देन एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन अमेजिंग रिजल्ट. ओके, तो सेकंड जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. नाउ थर्ड जो सेक्शन है वो होती है रीजनिंग सेक्शन. एंड यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पे किया है. फर्स्ट वन इज़ द बेसिक रीजनिंग, जो कि ना एसएससी में आती है, जो कि ना स्नैप में आती है, प्रीलिम्स ऑफ बैंक में भी कभी कभी आती है. ठीक है, बेसिक्स जो रीजनिंग होती है, जो सबको जानना इज़ इम्पॉर्टेंट. विदाउट नोइंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. मैंने देखा है बैंकिंग में इनइक्वालिटीज़ भी पूछी जाती है, तो दैट इज़ अ एक्स्ट्रा सेक्शन. स्नैप में सिलोगिज्म पूछी जाती है, एसएससी में भी पूछी जाती है, बैंक में भी काइंड ऑफ पूछी जाती है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर. बट आई वुड सजेस्ट गोइंग थ्रू द बेसिक रीजनिंग. एक्चुअली इट्स अ फन थिंग, सो यू कैन एक्चुअली हैव फन एंड नो दिस थिंग. आपको बहुत ज़्यादा इफोर्ट देना नहीं पड़ेगा, बट इफ़ यू नो द बेसिक रीजनिंग बहुत हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, तो बेसिक रीजनिंग कंप्लीट करो. यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है. यू कैन गो एंड यू कैन टेक 1 टॉपिक ईच एंड कंप्लीट दोज बेसिक रीजनिंग. सेकेंड आती है लॉजिकल रीजनिंग. तो लॉजिकल रीजनिंग जो कि ना बैंकिंग एग्जाम्स में एंड कैट की एग्जाम्स में आती है बहुत. ठीक है, इन मैथ में भी देखा जाता है. तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, इसमें आती है पजल्स, हाई लेवल पजल्स. ओके, और भी बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट. और कैट में तो बहुत हाई लेवल का भी रहती है. ठीक है, मतलब उसको आप कुछ कैटेगरीज नहीं कर सकते. इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग दैट यू विल बी रीडिंग इन बेसिक रीजनिंग. सबको मिक्सअप करके भी आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग में. तो लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली वाइडर सेक्शन, जहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चंस भी आती है, जो कि ना आप एक बार में भी सॉल्व कर सकते हो, और बहुत टफ भी होती है जैसे कैट की रीजनिंग होती है. तो इट विल डेवलप ओनली व्हेन यू practice and practice and practice and practice. There is no other way to actually score good in logical reasoning instead of doing practice. ठीक है, एंड द थर्ड सेक्शन जो रीजनिंग के अंडर आती है वो है कि डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन इज काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ रीजनिंग एज वेल एज नोइंग अरिथमेटिक टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है, तो डीआई तो बहुत बार पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में, बहुत देखा जाता है. कैट में आती है, जैट में आती है, एंड
बहुत मतलब एसएससी में बहुत कम आती है, मतलब बहुत जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो काइंड ऑफ मतलब कंपेरेटिवली ईजी आती है, बट आती है. तो यू हैव टू नो दिस DI ऑल्सो, लाइक हाउ यू कैन एक्चुअली रीड वन ग्राफ एंड सॉल्व दैट. सो प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ देम एक्चुअली गिव यू अ बेटर एज. तो रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे. तो हम लोग ने जो देखा उसमें 3 चीज़ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग दी बेसिक, एंड बेसिक सबके लिए मैं बोलूँगा बहुत ईजी होती है, फन भी होती है. कर लो भाई, कर लो, ठीक है. ये एक बार आप कंप्लीट भी कर लेते हो ना, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा बार बार, बिकॉज इट्स सो ईजी एक्चुअली, ठीक. फिर उसके बाद जो सेकंड आती है वो है कि हमारा जो हाई लेवल लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करना होती है. डेली आप सेट लगाओ, प्रैक्टिस करो. DI और एलर जो थर्ड में है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी प्रैक्टिस से ही होती है. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड व्हाट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज गोइंग टू कम ऑन योर एग्जाम, प्रैक्टिस दैट डेली. ऑलराइट. सो अभी तक हमने जो किया वो था इंग्लिश सब्जेक्ट, क्वांटिटिव यानी कि मैथ्स एंड रीजनिंग. एंड टू बी ऑनेस्ट ये होती है फाउंडेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव. मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस ये 3 जो है ये रहेगा ही रहेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड वर्बल. तो इसको तो आप रेगुलर दो एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन. इन तीनों को पहले कंप्लीट करो, एकदम बैठ के पूरा कंप्लीट करो. अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है फिर भी आप डेली ये 3 तो करना ही करना, बिकॉज दिस फॉर्म्स द वेरी बेसिक ऑफ ईच काइंड ऑफ एप्टीट्यूड एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव. नाउ लेट्स कम टू दी नंबर 4. एंड नंबर 4 में जो है वो है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली लोगों को तकलीफ देती है. SSC, बैंकिंग और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम मोस्टली आस्क करंट अफेयर्स. एंड जैसे कि जैट में जीके रहती है और कोई MBA एंट्रेंस में जीके नहीं रहती है, करंट अफेयर्स नहीं पूछी जाती है. But when you're going to appear for the exam, when the results are going to come out for MBA entrance exam, and when you're going to give the interview for your MBA exam, or you are going to sit for the group discussion, then you will understand the value of knowing current affairs. उसके पहले MBA प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली करंट अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बिकॉज डायरेक्टली कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता. बट व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर दैट इंटरव्यू, तब आपको पता चलेगा कि भाई करंट अफेयर्स अगर पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता. तो डिपेंडिंग ऑन विच एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव एंड हाउ मच वेटेज दैट एग्जाम इज हैविंग ऑन करंट अफेयर्स, गिव करंट अफेयर्स टाइम, करंट अफेयर्स पढ़ो. बिकॉज इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू रीड इट वन डे एंड मेरे दिमाग में हर कुछ आ जाएगा. नो, बहुत कुछ हो रहे हैं वर्ल्ड में एंड बहुत कुछ जानना भी है. विदाउट नोइंग दैट you are not, you also think ना, you don't know anything around the world and you are going to work in a profile जहाँ पे आपको इतना लोगों को handle करना पड़ेगा. How you are going to work as an individual also, knowing current affairs is very important because it actually develops our personality, right? तो current affairs को time दो daily. कोई भी YouTube का channel ले सकते हो या फिर कोई newspaper ले सकते हो, whatever it is, be aware of the current affair. Without that you are not going to go anywhere. सो करंट अफेयर को फर्स्ट डे से ही थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करना स्टार्ट करो, बिकॉज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू रीड यू आर गोइंग टू लाइक फील लाइक भाई क्या ही पढ़ रहे हैं. बट वंस यू गेट अकस्टम टू दैट, वंस अगेन 3-4 महीने बाद जब आप फिर से मतलब पढ़ने लगोगे ना, यू विल गोइंग टू गेट सम कनेक्शन. अच्छा ये हुआ था, उसी का रिजल्ट ये है, अच्छा ये कहीं मैंने सुना था. तो इट्स गोइंग टू एक्चुअली कनेक्ट द डॉट. सो कीप रीडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम द डे 1. गिव टाइम अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ एग्जाम. The 5th one, kind of similar to current affair, which is knowing the static GK, general knowledge, general awareness. Okay, static GK, what we call as, यानी कि history, economy, polity, geography, whatever it is. Knowing that will actually once again develop your personality, and it is going to help in the SSC and banking exam directly because they ask direct question from the static GK portion. They can be anywhere. They can come from anywhere. Okay, and also in the interview that you are going to appear for MBA. मैंने recently एक इंटरव्यू दिया था MBA के लिए, and you can go actually and check that video. You will be able to understand that how much important knowing static GK is. मैंने कहीं पढ़ा था 1 साल पहले जब पढ़ रही थी विथ आई वाज स्टार्टिंग एंड आई यूज्ड टू एक्चुअली कंज्यूम और रीड अबाउट GK डेली. तो तब कहीं जाके एक टॉपिक पढ़ा था एंड ऑटोमेटिकली दे आस्क्ड दैट थिंग एंड मैंने कनेक्ट कर पाया एंड उसका आंसर दे पाई. तो दैट वाज अ काइंड ऑफ मिरेकल दैट हैपेंड ऑन दैट डे. सो नोइंग करंट अफेयर्स, नोइंग GK इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैटिक GK एक अलग पोर्शन है, करंट अफेयर्स एक अलग पोर्शन है. दोनों को थोड़ा थोड़ा करके टाइम दो. आज सपोज आप हिस्ट्री का उठाया, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, कल
पॉलिटी पढ़ो, परसों जियोग्राफी पढ़ो, बट एटलीस्ट नो द वेरी बेसिक ऑफ ईच सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड टिल 10, जो कि ना एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक एजुकेटेड इंडिविजुअल होने के नाते आपको जानना पड़ता है उसको, यू नो दैट, बट एक्चुअली यू नीड टू रिवाइज इट वंस अगैन सो दैट वो आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए एंड यू कैन गो एंड गिव योर एग्जाम द बेस्ट. ओके, नाउ कम्स द सिक्स्थ वन, विच इज़ गिविंग मॉक्स एंड एनालाइजिंग देम. तो mock देना is also one of the most important thing once you are get done with the very basic thing. At least for you did your preparation for 1 month, you know the very basic thing that how it feels like to study quants, English का क्या है, ठीक है, सब कुछ आपने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिए है. अब नाउ जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसका टेस्ट खरीदो, उसका मॉक सीरीज़ खरीदो एंड मॉक एनालाइज करते रहो. मॉक दो, उसको एनालाइज करो, गलती क्या है एक कॉपी में ना लिखते जाओ कि क्या क्या गलत आप कर रहे हो, आज क्या क्या आपने नया सीखा, किस तरह से ये क्वेश्चन को मेरे को अटेम्प्ट करना चाहिए था ताकि और भी जल्दी मैं इसको सॉल्व कर पाती. तो यू हैव टू एक्चुअली गिव टाइम टू योर मॉक. कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके हिसाब से एक टेस्ट मॉक खरीद के स्टार्ट गिविंग दैट, बिकॉज आज की डेट पे एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ एंड एवरीवन इज़ गिविंग मल्टीपल अमाउंट ऑफ मॉक्स. तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पहले बार एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं. ओके, वो घर पे बैठे बैठे बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसको बहुत अच्छे से अवेयर है कि कब टाइमर ऑन होगा, कब टाइमर यहाँ पे मेरे को ख़त्म करना पड़ेगा, कौन कौन से अटेंड करे ना करे. एंड दैट थिंग यू आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कवर यू बाय योर सेल्फ. कोई आपको बोलेगा, कोई आपका मेंटर भी बोलेगा, दैट इज़ ओके, बट आप जब तक आप खुद नहीं समझोगे यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कवर योर पोटेंशियल एंड व्हाट सूट्स यू, तब तक तो नहीं होगा ना. तो एटलीस्ट मॉक देना स्टार्ट कर दो. जो भी एग्ज़ाम सब दे रहे हो उसके मॉक खरीदो, दो एंड गेट रेडी टू क्रैक योर एग्जाम. राइट, तो दिस वॉज एक्चुअली द रूटीन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि 6 चीज़ें हैं जो मेरे को डेली कंसिस्टेंटली करना है. नंबर 1 इंग्लिश, then quants, then reasoning, then current affairs, static GK, and the last one was mock and analyze. Alright, अब आती है संडे. संडे में क्या करें, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने संडे को थोड़ा स्पेशल ट्रीट किया है बिकॉज इट्स ऑटोमेटिकली फिट इन आवर माइंड फ्रॉम द चाइल्डहुड कि संडे के दिन थोड़ा स्पेशल होती है. राइट, स्कूल रहती है, फिर छुट्टी तो संडे को ही रहती है, संडे में कुछ अलग से स्पेशल होता है, हमेशा ये दिमाग में है. तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू फ्रॉम मंडे टू सैटरडे दिस थिंग, एंड आपको दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि भाई संडे आने के बाद तो थोड़ा कुछ अलग होगा, तो वी आर गोइंग टू गेट सम रीड ऑफ फ्रॉम दिस मोनोटोनस रूटीन. ऑलराइट, तो देखते हैं कि संडे के दिन क्या क्या करना है. संडे के दिन एक्चुअली 3 चीज़ें करनी है, बहुत सिंपल चीज़ है, 3 चीज़ें करनी है. उसमें सबसे पहली आती है कि मॉक and analyze. Once again you have to give mock and analyze because इस दिन आप पूरा सिचुएशन पूरा ऐसे फिक्स करो कि एकदम एग्ज़ाम हॉल में जाके आप मॉक दे रहे हो, एक ऐसा फील लाओ अपने आप में. ठीक है, जो डेली मॉक भी दे रहे हो ना आप, तो वहाँ पे ना सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो, बट इसमें सेक्शनल मॉक नहीं देना है. पूरा एकदम एग्ज़ाम फील लेके एग्ज़ाम दो पूरा, ठीक है, एंड उसको एनालाइज करो आराम से. अगर आपका कोई एग्ज़ाम है जो कि ना 1 घंटा होता है तो आप 2 एग्ज़ाम दे दो, 2 मॉक दे दो उस दिन. ठीक है, अगर आप जैसे कि कैट और जैड दे रहे हो तो तब तो आपको सारा दिन उसी दिन लग जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट योर प्रेफरेंस गिव मॉक, बट इस दिन जो मॉक आप संडे में दे रहे हो वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल मॉक जो कि ना काइंड ऑफ पूरा एग्ज़ाम वाला फील लेके मेरे को देना है. ठीक है, डन. The second thing is actually you are going to do a revision. Revision of what? Revision of all those things that you learnt in the 6 days. जो भी आप हफ्ते में मंडे से सैटरडे पढ़े हो उसको रिवाइज करना है इस दिन. तो रिवीजन में क्या क्या आता है? रिवीजन में आता है सबसे पहले जो आपने वोकैबुलरी वर्ड्स सीखा उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो. जो आपने कैलकुलेशन का नया टेक्निक सीखा, कोई स्क्वायर्स सीखा, कोई प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ आपने सीखा, वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो. इंग्लिश का जो भी आपने पढ़ा, व्हाट आर द रॉन्ग थिंग दैट यू आर डूइंग, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट यू मिस्टेकनली डिड, उसको थोड़ा रिवाइज कर लो. आप नेक्स्ट करंट अफेयर्स और जीके जो जो आपने पढ़ा एक बार जस्ट पेजेस को ऐसे ऐसे करके देख लो. यू आर गोइंग टू हैव इट इन योर मेमोरी. फिर मैंने कहा था कि एक मॉक जो आप दे रहे हो उसका एक कॉपी बनाओ एंड उसमें आप
लिख रखो कि कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा किस तरह से करना चाहिए, तो उसको भी एक बार पेजेस देख लो कि भाई मैं जब अब नेक्स्ट दिन से मैं मॉक देने वाली हूँ, जो अगले हफ्ते से मैं मॉक देने वाली हूँ, तो ये गलती मैं नहीं करना चाहती, बिकॉज दिस आर द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन एंड दिस आर द सिली मिस्टेक। तो ऐसा करके आप थोड़ा मॉक बुक को भी देख लो। फिर आती है मैथ्स का फॉर्मूला और LRDI, जैसे कि रीजनिंग का आपने कुछ सीखा या फिर मैथ्स का कुछ आपने सीखा, उसका फॉर्मूला बुक बनाओ, मैथ्स का एक, रीजनिंग का एक फॉर्मूला बुक बनाओ, ताकि एक जगह पे रिपोजिटरी रहे आपका सब कुछ, एंड बस आपको रिवाइज करने के लिए बस पेजेस ऐसे ऐसे करके देखना है, बस अब डन। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बट टाइम भी देनी है रिविजन में, बिकॉज आपने ऑलरेडी कर चुका है। आप अपने ब्रेन को थोड़ा और समझा दो कि भाई ये करना होता है, चलो ठीक है, रिवाइज डन। ऑलराइट, नाउ द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, एंड ये करके हम लोग को छुट्टी मिल जाएगा। तो ये है एक्चुअली एग्ज़ाम वाइज स्पेशल प्रिपरेशन। तो इसमें क्या आती है, इसमें वो हर एक चीज़ आती है, जब से हम लोग ने बात करना स्टार्ट किया, वो हर एक चीज़ आती है जो आपका एग्ज़ाम आपसे मांगता है। लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसी एग्ज़ाम होती है जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम में ना डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहती है। तो हफ्ते में तो आपने डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर नहीं दिया, आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जैसे इसे राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग, उसको लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, राइट। आप कैसे उसको छोड़ दे सकते हो, एंड फिर जब करीब आ जाएगा एग्ज़ाम, देन यू आर गोइंग टू फील बर्डन अमंग योर सेल्फ कि भाई मैंने तो वो नहीं किया। तो ये नहीं करना है। कोई भी आप एग्ज़ाम देने का टारगेट कर रहे हो, यू डेफिनेटली नो इट्स सिलेबस। हफ्ते में आप तो बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि ना हर एक एग्ज़ाम के लिए वो एप्लीकेबल है, बट आप जिस एग्ज़ाम को देने चाहते हो, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आई एम समवन हु इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर गिविंग बैंकिंग एग्ज़ाम और ज़ैट एग्ज़ाम, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ना कैट का एग्ज़ाम और SSC का एग्ज़ाम भी दे रही हूँ, तो मैं 4 एग्ज़ाम दे रही हूँ, एंड 4 के हिसाब से मैं सब कुछ जो हफ्ते में करना है मैं कर रही हूँ। बट इसमें स्पेशल कुछ मांगती है, जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर होती है, जैसे मैंने कहा लेटर राइटिंग, इसे राइटिंग होती है, ज़ैट की पेपर में इसे राइटिंग होती है, और उसके साथ साथ एक अलग से सेक्शन रहती है, जैसे कि कंपनीज़ के बारे में आपको बहुत जानना पड़ता है, प्रोडक्ट्स, कंपनीज़, CEOs, उसके बारे में। तो आप जानते हो कि ये मेरे को पूछे जाने वाले हैं, बट हफ्ते में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो डेली, बट यू नो दैट दीज आर वेरी बेसिक, एंड आप अगर हफ्ते में एक बार भी टाइम देते हो, यू आर वे अहेड ऑफ अदर पीपल, ठीक है। बहुत टाइम नहीं देना है इनको, बहुत ही कम टाइम देना है, बट ये एक्चुअली अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, देन एक्चुअली यू आर वे अहेड ऑफ अदर्स। तो इस एग्ज़ाम वाइज स्पेशल में क्या क्या आती है, जैसे कि सपोज़ यू आर एक्चुअली गोइंग टू गिव एनी पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, रिटन एबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे इसे राइटिंग होती है, इन सब के बारे में थोड़ा जानो, यूट्यूब में सर्च करो कि क्या क्या होती है, बी अवेयर ऑफ दोज, ओके। या फिर हो सकती है कि आपका कोई एग्ज़ाम में होती है कि टाइपिंग टेस्ट होती है, स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम हो गए, तो टाइपिंग करो, टाइपिंग का प्रैक्टिस कर लो इस दिन। या फिर किसी में कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी का बैंकिंग अवेयरनेस, किसी का फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो नो अबाउट दोज, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके बारे में आप कर लो। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके बारे में जानो, या फिर फॉर्म्स, या फिर कुछ भी जो आपको लगता है कि जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके लिए अब हफ्ते में एक ही दिन टाइम दो एंड सारी चीज़ उस दिन कर लो। दैट वॉज द थिंग, एंड आई एम प्रेटी श्योर अगर आप ये फॉलो करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली मिस आउट एनी काइंड ऑफ थिंग। सब कुछ आपका डे टू डे प्रिपेयर होते रहेंगे, एंड आप लास्ट डे में ये नहीं फील करोगे कि भाई मेरा तो ये नहीं हुआ, ये भी करना था, ये कैसे करें, ऐसा नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जहाँ पे सारी चीज़ इन्वॉल्व है, सारी चीज़ को मैंने कंक्लूड कर दिया है। Alright, so whatever the exam that you're going to give, I hope you start preparing like a serious candidate, give yourself time, follow consistently and give your best, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे हो तब ये मत बोलो कि भाई मैं और भी अच्छे से दे पाती थी, बट ये बोलो कि मैंने जितना दिया उतना मेरे हिसाब से बेस्ट है। I may not be the best, but I give the best. That's the thing. I hope this video is useful to you. If you are someone who is going to start your preparation and have exams nearby, all the best. And if this video is useful to you, kindly do like, share and subscribe to my channel, and put a comment if you have any kind of queries or any suggestion for me. Thank you.